इज रीडिंग टाइम, रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे हम। ठीक है, रीडिंग प्रैक्टिस करने के लिए मैं फिर से वही बुक लेकर के आई हूँ जो मैंने स्टार्ट करा था। आपको बस उस बुक को ध्यान से पढ़ना है। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ इस रीडिंग प्रैक्टिस के दौरान, कि इस रीडिंग प्रैक्टिस में जो है मैं आपको स्टोरी पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब इस स्टोरी में मैं आपको हिंदी मीनिंग नहीं बताने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ पढ़ें, सुने, समझें, ट्राई करें। जितने भी वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हैं स्टोरीज में, आपको उस वर्ड को अपने कॉपी में लिखना है और उसके मीनिंग्स को खोजना है। ये काम आपका भी है, मैं हर काम नहीं कर सकती हूँ आपके लिए। ठीक है, सो यू ऑल्सो हैव टू डू समथिंग, आपको भी कुछ करने की जरूरत है। तो जितने भी हाईलाइटेड वर्ड हैं, अगर आपको उसमें से कोई भी मीनिंग नहीं आता है, आप उसका एक लिस्ट बनाएंगे और उसके मीनिंग्स को लिखेंगे। और मैं आज आपको सिर्फ रीडिंग करके बताऊंगी ताकि आप एक स्टोरी के फॉर्म में उसको बस सुने, क्योंकि हमने बात करी थी कि रीडिंग के लिए आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होता है कि पढ़ना, समझना, फिर उसके बाद दोबारा पढ़ना ताकि उसको और डीपली समझ सके। तो नेक्स्ट क्लास में मैं उस स्टोरी को डीपली एक्सप्लेन करूंगी, बट आज के क्लास में मैं आपको रीड करके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। बुक का नाम मैंने आपको बता रखा है, इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज फॉर इंटरमीडिएट लर्नर्स के लिए है। आपके एक लेवल से ऊपर पढ़ा रही हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। ऑली रिचर्ड्स की बुक है। इसमें 8 अनकन्वेंशनल शॉर्ट स्टोरीज हैं, जिसमें कि हम 8 अनकन्वेंशनल शॉर्ट स्टोरीज पढ़ेंगे टू ग्रो योर वोकैबुलरी एंड लर्न इंग्लिश द फन वे। दिस इज आवर मोटो, दिस इज आवर एम। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी नंबर 1, चैप्टर नंबर 1। बस ध्यान से आपको सुनना है ताकि आपको समझ में आने लगे चीजें। ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें तो आप सीख चुके हो। पहले चैप्टर का नाम है परसिस्टेंस पीस। ठीक है, अब जो भी बातें होंगी इंग्लिश में होंगी, आपको सिर्फ इंग्लिश सुनना है। लिसनिंग प्रैक्टिस जरूरी भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी हिंदी मीनिंग सीखेंगे कि इस स्टोरी का एक्चुअल मीनिंग क्या था, और आप ये बताओगे कमेंट सेक्शन में कि आपको मीनिंग समझ में आया या नहीं। और जब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको मीनिंग बताऊंगी तो आप मुझे बताओगे आपको जितनी भी चीजें समझ में आई थी वो सही थी या गलत थी। और साथ ही साथ ये जो आप हाईलाइटेड वर्ड देख रहे हो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इन सभी चीजों का मीनिंग आपको खुद के लिखना है और कमेंट सेक्शन में मुझे ये चाहिए। और मुझे आप बताओगे कि आपको स्पोकन इंग्लिश की जो ये सीरीज मैंने अब निकाली है वो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। एंड अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और मुझे ये फील कराएं कि ठीक है मैंने सही डिसीजन लिया है ये स्टार्ट करने का, तो कि मैं ताकि मैं और भी वीडियोस बना पाऊँ। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। परसिस्टेंस Persistence Peace, chapter number 1. Why can't we come in? I asked the large man standing in front of us. He was wearing a dark suit and he was tall and strong. He was blocking the door to Zara's nightclub. We could hear the loud dance music behind the door. We wanted to go in. I had lost my job the other day. I needed to have a night of fun. I didn't want to have a lot of stress, so we had to find a way to get inside. The tall man was a bouncer. His job was to let the right people in and to keep everyone else out. He pointed to his clipboard and frowned. Your name is not on the list. I looked up at him. He was at least 6 inches taller than me. How do we get on this list? My friends, Nate and Aaron, and I had dressed up. We had driven across town to come to Zara's. The new club was famous and wanted to check it out. But the bouncer did not reply. Instead, he looked over my skinny shoulder. There was a long line of people behind me. How do I get in? I asked again, and I snapped my fingers. I was trying to get his attention. You don't, he said. He waved the next guest in the line to come forward. She was a beautiful blonde girl. When I saw her, I had an idea. Wait, wait, I protested. Our girlfriends are already inside. It was a lie. Aaron looked at me in a strange way. Perhaps he thought, is Jack crazy? Jack, what are you doing? Aaron yelled in my ear.
He was a good-looking guy, but he was also shy. He never took any risk. Be quiet, I whispered back. I didn't want the bouncer to hear. I didn't want bouncer to hear. But he did hear us. He rolled his eyes and tried to ignore me again. No, really? I persisted. Our girlfriends are inside waiting for us. He lifted a red velvet robe to let the blonde girl pass. Thanks, Bruce, she said as she walked by him. I could smell her perfume. I wanted to follow her in, but Bruce, the bouncer, shook his head at me. Are your friends really inside? Yes, I answered, our girlfriends. His expression was doubtful. He rubbed his bald head and then he lifted his clipboard again. And, okay, what are their names? Tell me their names. Well, I didn't know their names because they didn't exist. Uh, you are done, he said. He smiled and pushed me aside. Next. We couldn't, we could not get in. We could not get in. So we left Zara's. We went across the street for coffee. We went across the street for coffee. That was dumb, Jack, Aaron said. And he took off his jacket. He put on his favorite clothes to come out. He took off his jacket. He put on his favorite clothes to come out. With his good looks and clothes, he could be an actor, but his attitude was very negative. I felt bad because it had been my idea to go out. Everyone knew it was impossible to get inside Zara's without a reservation, and reservations were impossible to get. But I had wanted to try. Nate ordered his coffee black, along with two chocolate glazed donuts. Nate was very different from Aaron. He was more adventurous and happy. Nate loved to eat sweets like cakes, candies, so he was a bit overweight. I'll have the same, Aaron told the waiter. But unglazed donut, please. Unglazed donut, please. And what would you like, sir? What would you like, sir? The waiter asked me. What would you like, sir? I would like to know how to get into the nightclub. I told him. How to get into the nightclub. You can't get it. You can't get in there. Not without a reservation or a date, he said. Unless you are a female, of course, it is easy for the girls to go in. It is easy for the girls to go in. They want more girls inside. Why? Aaron asked. Because the guys will go there and spend money. I nodded. That's unfair. The waiter shrugged his shoulders. Maybe, but that's life. If you want to go to Zara's, you will have to find someone to go with. Find someone to go with. You want to order anything? Just coffee with milk. No donuts. I looked at my friends. Who eats donut at 9 o'clock at night? Who eats donut at night or 9 o'clock at night? Nate and Aaron exchanged looks. We do, they said together. I shied and crossed my arms. It looked like I was going to spending the evening with these two. After our coffees and donuts were finished, we paid our check. I noticed three girls sitting at a table. They were talking. They were also finished their food and drinks. Guys, look, I said to my friends. What if? No, Aaron said, cutting off my sentence. Jack, let's go. Wait, what, Jack? Nate asked. Do you want to talk to them? I combed my black hair back with my fingers. I combed my black hair back with my fingers. We can try. Why not? Come on. I just lost my job. Do me a favor. What is the worst thing that can happen? What is the worst thing that can happen? Aaron stared at me. But Nate
punched him in the arm. Punched him in the arm. Come on, Aaron, he said. Jack is right. We can ask them. Perhaps they will want to go with us to Zara's. If we get inside, they can stay with us. If we get inside, they can stay with us. Or they can leave us if they want to. The girls were watching us. The girls were watching us. One of them, a girl with red hair, one of them, a girl with red hair, leaned over the table. She whispered something to her friends and they nodded. She whispered something to her friends and they nodded. None of them were smiling. None of them were smiling. I felt a lump in my throat. I felt a lump in my throat, but decided to go forward. Decided to go forward. I walked over to their table. My friends stayed behind me. My friends stayed behind me. Hi, hi, my name is Jack Cruz. No relationship to Tom Cruise. I said, making a bad joke. Clearly, the redhead said. Her friends laughed, but I laughed with them. A little. Would you like to go to Zara's with us? The bouncer would not let us in, I said, but maybe we could get in with dates. The smallest of the three girls, the smallest one of the three girls, the smallest one of the three girls, date, said, dates? We don't even know you. I know, I said, but let's just try. Don't you want to see inside Zara's? The girls looked through the window. The girls looked through the window at the long line in front of the nightclub. The long line in front of the nightclub. Then they looked at each other. Then they looked at each other. We don't need you. We don't need you to get inside, said the redhead. Said the redhead. But I guess we can help you boys out. By the way, my name is Caprice. All right, this is the story. Now let's go to the summary. अगर आपको समझ में नहीं आया, be patient और सोचिए कि आपको सब समझ में आ रहा है. ठीक है, छोटे छोटे जो सेंटेंसेस मैंने आपको बोले वो ध्यान से सुनना, फिर से रिपीट करके सुनना, समझ में आएगा. समरी क्या थी? Jock Cruz has lost his job. Jock Cruz has lost his job. He and his friends, Nate and Aaron, go out a nightclub named Zara's. Nightclub named Zara. Nightclub का नाम क्या था? Zara. But they cannot get in. They do not have reservations. Reservations नहीं थे. They go across the street to have coffee. उन्होंने रोड के पास क्रॉस करके स्ट्रीट के पास गए थे कॉफी के लिए एंड डोनट्स के लिए. किसमें? कैफे में. दे सी ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स इन द कैफे. उन्होंने ग्रुप ऑफ गर्ल्स को देखा, 3 ग्रुप ऑफ गर्ल्स को. 3 लड़कियां थी कैफे में. दे आस्क्ड द गर्ल. उन्होंने गर्ल से पूछा इफ दे वुड लाइक टू गो टू द क्लब टुगेदर. क्या वो लोग चाहेंगी जाना एक साथ क्लब में? तो गर्ल जो है एंड में जाकर के अग्री कर देती है. दिस इज अबाउट स्टोरी. जैक क्रूज का नाम का लड़का जो था वो अपना जॉब लॉस्ट कर चुका था. वो और उसके फ्रेंड्स जो है नेट और एरन. तो जैक क्रूज एक लड़का हुआ, फिर नेट हो गया, फिर एरन हो गया. ये गो आउट टू अ नाइट क्लब नेम जारा. जारा नाम का एक नाइट क्लब था, उसमें जाने की बात कर रहे थे. बट दे कैन नॉट गेट इन. पर उन लोगों को अंदर जाने के लिए नहीं मिला. दे डू नॉट हैव रिजर्वेशंस. उनके पास रिजर्वेशंस नहीं है. एंड दे गो अक्रॉस द स्ट्रीट टू हैव कॉफी एंड डोनट्स इन अ कैफे. वो लोग स्ट्रीट के अक्रॉस जाकर के स्ट्रीट के पास जाकर के कॉफी और डोनट खाते हैं कैफे में. और उन्होंने गर्ल्स के ग्रुप को देखा कैफे में. उन्होंने पूछा गर्ल से कि अगर वो लोग चाहेंगी तो वो लोग उनके साथ क्लब में जा सकती हैं साथ में. तो गर्ल जो है एंड में जाकर के अग्री कर देती हैं. दिस इज द समरी ऑफ द स्टोरी. ठीक है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या है? व्हाट इज द बॉन्सर्स जॉब एट जारा. जॉब बॉन्सर का जॉब था वो जारा में, वो क्या था? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे 1 नंबर का आंसर क्या होगा. फिर व्हाट गिव्स जैक एन आइडिया अबाउट हाउ टू गेट इनसाइड. क्या आइडिया मिलता है जैक को कि वो अंदर कैसे जा सकता है? ये आइडिया क्या था जैक का? आप इसमें से बताओगे मुझे इसका आइडिया क्या था ABCD में से. नाउ व्हाई डज जैक थिंक्स नीट इज अ लिटिल ओवरवेट. जैक को क्यों लगता है कि नीट जो उसका दोस्त था वो थोड़ा सा ओवरवेट था, मतलब थोड़ा सा हेल्दी था? ऐसा क्यों लगता है बताना मुझे इसमें से. फिर जैक मेक्स अ जोक बट अबाउट नॉट बीइंग रिलेटेड टू एन एक्टर. बट ही थिंक्स द जोक इज. जैक जो है वो एक जोक करता है ना कि जो कि रिलेटेड से एक्टर से रिलेटेड नहीं होता है. बट फिर भी वो क्या सोचता है कि उसका जोक क्या था? फनी था, वेरी फनी था, नॉट वेरी फनी एट ऑल, टू सीरियस, क्या था? द गर्ल्स आर टू द गर्ल्स आर एक्साइटेड टू द डेट टू बॉयज.
angry for being bothered, say they will help, will not help. इसमें से आंसर क्या होगा? दिस इज अबाउट दिस चैप्टर. अब आप मुझे बताओगे क्वेश्चन का आंसर. ठीक है, आप पॉज कर सकते हो और पॉज करके मुझे बता सकते हो कि आंसर क्या होगा. ऑलराइट, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड. ठीक है, मैं आपको छोटे छोटे वर्ड इसमें सिखाऊंगी. ठीक है, ताकि आप ये ध्यान दे सकें कि ठीक है, अगर आपको ये सारी चीजें नहीं आती हैं तो आप इस चीज को पढ़ सकते हो. ऑलराइट, पहली चीज है पॉइंट. ठीक है, मैं ये सारी चीजें क्यों लिख रही हूँ यहाँ पे, जस्ट बिकॉज आप ये जान पाए कि ये सारी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है एक सेंटेंस में. तो मैंने एक बार बताया पॉइंट, फिर लुक, ड्रेस, ड्राइव, स्नैप, ट्राई, वेव, सी और सॉ, प्रोटेस्ट, कम, स्टैंड, बियर, ब्लॉक, हियर, वांट, लॉस्ट, नीड, फाइंड. ठीक है, ये सारी बेसिक बेसिक चीजें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं इस बुक से ही उठाई हूँ, ताकि आप इन सभी चीजों पे ध्यान दे पाए. ऑलराइट, मैं आपको मैं आपको टाइम देती हूँ, आप इसे पॉज करो, फिर से बुक को खुद से पढ़ना, और फिर उसके बाद जो है आप इसमें से जो वर्ड्स आपको समझ में नहीं आए हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, या फिर नहीं तो गूगल करके आप उसका मीनिंग चेक करोगे. ऑलराइट, देखो यहाँ पे प्रोटेस्ट के बाद येल, येल्ड, टेक, टुक, विस्पर, हियर. ऑलराइट, सो ये हो गया आपके कुछ वर्ड्स. नाउ अब आप यहाँ पे ध्यान दो. विस्पर्ड हो गया, विस्पर का विस्पर्ड होता है, वर्ब फॉर्म है. डिड नॉट वॉन्ट, डिड के साथ हमेशा वी1 आएगा, हमेशा वी1. डिड नॉट वॉन्ट, तो यहाँ पे डिड वॉन्ट और डिड नॉट वॉन्ट, तो ये डिडेंट जो लिखा हुआ है ये हो गया डिड नॉट, दैट इज डिडेंट. ठीक है, अपॉस्ट्रोफी टी. नाउ हियर, रोल, रोल्ड, ट्राई, ट्राइड, इग्नोर, persist, persisted, smell, shook, shake, walk, walked, lift, lifted. ये वर्ब फॉर्म है. वर्ब मैं बताऊंगी आपको ग्रामर सेक्शन में, तो आप सीखेंगे. ठीक है, रब, rubbed, lift, lifted, smile, smiled, push, pushed, take, took, go, went, gone, put. ठीक है, फिर अब ध्यान दो कि एक बुक में, एक ही स्टोरी में कितने सारे वर्ब हैं जो आप याद कर सकते हैं, आप ध्यान में रख सकते हैं, ताकि आगे जा करके आपको बहुत इजी हो जाए समझने में. ठीक है, फील, फेल्ट, ऑर्डर्ड, ऑर्डर. ठीक है, ऑर्डर का क्या हो गया, ऑर्डर्ड. टू के साथ क्या आता है, वी1 आता है, टू के साथ हमेशा वी1 आएगा, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. टू ईट, कैन नॉट, टेल, टोल्ड, हैड प्लस वांटेड, हैड वांटेड, हैड के साथ वी3 आया. नो, न्यू, नो, न्यू. ऑलराइट, लेट्स सी समथिंग एल्स. यस, अब देखिए, अब यहाँ पे विल जो है हमेशा अपने साथ वी1 लेके आएगा, विल के साथ हमेशा वी1 आएगा, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. विल गो, नॉड, nodded, shrug, shrugged, nod, nodded, shrug, shrugged, spend, spent, spent, spend, spend करना, खर्च करना, spent, spent, exchange, do, say, said, look, looked, go, going, spend, spent, spending, notice, noticed, notice, noticed, shy, shied, S-I-G-H, sigh, shy, shied, shy, shied, shy, shied, cross, crossed, comped, stare, stared, punch, punched, watch, watched, watching, leave, leaned, lean, lean, leaned, leaned over, perhaps, sit, sitting, paid, pay, finish, finished, whisper, whispered, 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 whisper, whispered, nod, nodded, walk, walked, punch, punched. Now feel, felt. Feel का क्या होता है, felt. Decide, decided. Walk, walked. Stay, stayed. Laugh, laughed. Laugh, laughed. Look, looked. All right, laughed, looked. Do not need,
डू नॉट के साथ क्या आ रहा है, V1 आ रहा है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट फ्यू वर्ड्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर, ताकि आप इसे ध्यान में रखें। और ये सारे वर्ब हैं, ठीक है। जितने भी चीजें मैंने अपने आपको दिखाई अभी जो लिखा हुआ है, ये सब के सब वर्ब है जो कि इस स्टोरी में यूज हुआ है। आपको इन सभी पे ध्यान देना। आपको नहीं आता है, आप एक बार गूगल करो, आप उसके मीनिंग्स को चेक करो, ताकि आपको चीजें समझ में आने लगे। ये चैप्टर मैंने रीड किया है ताकि आपको पता चले कि रीड करने के बाद चीजें कैसे समझ में आती हैं। फिर नेक्स्ट डे इस चैप्टर को मैं हिंदी में समझाऊंगी, और आगे की जो भी प्रोसेस है, अभी तक जितने भी क्लासेस हो रखे हैं, आप ट्राई करें कि उन क्लासेस को आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर लें। आपके पास टाइम है, मैं टाइम ले करके क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ। यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू वर्क स्मार्ट, यू हैव टू बिकम कॉन्फिडेंट। आप एनर्जेटिक फील करो, आप फील करो जब कि मुझे सीखना है। तो जब आप एकदम एक्साइटेड होकर के कुछ चीज सीखते हो तो आप बहुत जल्दी सीखते हो, और आपको एनर्जी मिलती है उस चीज को ग्रैब करने की। आपका अटेंशन स्पैन बढ़ता है, आप अच्छे तरीके से चीजों को सीख सकते हो। तो आप ट्राई करो कि आप इजली वे में सीखो, बर्डन लेके मत सीखो। ऑलराइट, 30 डेज की जो क्लास होगी मेरी बेसिक स्पोकन इंग्लिश की, आप वो पूरी तरीके से अच्छे से सीख करके समझे, ताकि आपको आगे जाकर के जो भी क्लासेस मेरी आएंगी इंग्लिश में ही आएंगी। ये मैं पहले ही बता रही हूँ, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस मेरी हिंदी में रहेंगी, बाकी की सारी क्लासेस इंग्लिश में होने वाली हैं 30 डेज के बाद। ग्रामर सेक्शन की प्लेलिस्ट है, आप ग्रामर सेक्शन की प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर ले। चेक करने के बाद ये होगा, आपका ग्रामर भी साथ साथ होगा, और स्पोकन इंग्लिश की जो बेस है आपकी वो भी मजबूत रहेगी। डेली सेंटेंसेस भी करा रखे हैं मैंने, वो भी आप देखें, और रीडिंग सेक्शन भी है। सो रीडिंग प्लेलिस्ट में आप जाकर के स्टोरी सुन सकते हैं, उसमें एनसीईआरटी और कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री ज्योग्राफी से रिलेटेड मैं करवा रही हूँ, ताकि इससे आपके क्या होगा ना कि आपकी टॉपिक थोड़ी सी ब्रॉडन होगी, आपकी चीजों की समझने की क्षमता बढ़ेगी। ऑलराइट, बाय, टेक केयर।